हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं और एज़ यूजुअल मैं और टोगो निकल चुके हैं अपनी न्यू डेस्टिनेशन की साइड। एंड दिस टाइम आवर डेस्टिनेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and well known for its ski point and also known as snow point in Himachal Pradesh, and this is really amazing one. I have been so many times to this Solang Valley, but this will be a new experience because this is for the first time I'm moving with my dog. और वो एरिया जहाँ आज हम ट्रैक करने वाले हैं वो एरिया स्पेशली एक ट्रैकिंग पॉइंट है. इट इज़ टूवर्ड्स अंजनी महादेव टेम्पल एंड वेरी फेमस एंड एंशियंट temple it is, and I think it will be enjoyable because scenic beauty is very spectacular. This trek lies between Byaskund and Solang Nala. एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा लास्ट तक ज़रूर देखें एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मोर पेनोमिक व्यूज़ एंड द ब्यूटिफुल पेनोमिक व्यूज़. एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो then please don't forget to share and like. Togo was feeling quite excited. He was so enthusiastic at that time, and he was just like कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो. So many dogs were there. They were wandering here and there. So he was quite excited कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, and he was barking. He was ready to jump out. As we stepped out, Togo felt so crazy and he started running here and there. और टोगो हमें खींचने में इतनी फोर्स लगा रहा था कि हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग अपनी फोर्स भी लगा रहे हैं. हमें लग रहा था कोई हमें स्ले पे खींचता हुआ लेके जा रहा है. मोरोवर ट्रैक वाज क्वाइट स्मूथ एंड प्लेन. Togo makes me crazy on such beautiful places, and we play together, we run together, and he's the one who makes me to feel like a child.
Shh. Shh. The most unusual experience for me and the most different experience for me here to see the lingri. And lingri is, a pahadi vegetable, and this was really one of my favorite vegetables. अब मैंने कभी इसको देखा ही नहीं था कि ये लगती कहाँ पे है, कैसे लगती है, इसका प्लांट कैसा होता है, बट हाँ, ये दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट. सो मैंने खाई तो बहुत बार थी, बट यहाँ पे आना मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था. आई लव्ड इट. And plucking this special vegetable at my own, made me so happy. And this was my lifetime experience also. Catch it. टोगो वॉज लुकिंग हेयर लाइक अ नेचर एडमायरर, एंड ऐसे लग रहा था कि वो अपने एंगल से हर चीज़ को एडमायर कर रहा है, इंजॉय कर रहा है. एंड आई फील लाइक कि ही वॉज सेइंग थैंक्स टू मी कि मम्मा आप मुझे ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके आए हैं, एंड ही वॉज एन्जॉइंग अ लॉट.
On such a beautiful place, Togo was enjoying his favorite food. He must be feeling like a king. He enjoyed his food a lot and he drank water and then उसका फिर से यही इरादा था कि हम और आगे बढ़ें और आगे चलें अभी और ट्रैक करना है but it was too late and then we started back to home then और हम फिर वापस निकल पड़े. Our steps were so slow, we were feeling so lethargic and lazy. I think this was all because of they were our back steps, so we were not feeling like to go home back. Togo ended this journey with a treat, and this treat was for his cooperation.